Class. So today we will study about sound, chapter 12. So the question is how to produce a sound. So sound is produced due to the vibration of object. Vibration is the rapid to and fro motion. You all know about what is to and fro motion. As you can see in the figure, the thread is there and table tennis ball. And when we touch this ball and vibrate here and there, and the motion that we will do here is to and fro motion, and how this sound is produced. So the next is propagation of sound. The sound produced by a vibrating object travels through a medium to a listener. अब ये मीडियम कैसे हो सकते हैं? मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. When an object vibrates, the particles around the medium vibrates. So this is simple. When object vibrates होगा तो उसके आसपास जो भी हमारे particles हैं वो भी हमारे vibrate होंगे. अब particle vibrate क्यों है? Because वो object के contact में आए. Next is the disturbance produced by the vibrating body travels through the medium, but the particles do not move forward themselves. A wave is a disturbance which moves through a medium by the vibration of the particles in the medium. तो साउंड को हम क्या बोलते हैं? साउंड को हम एक वेव भी बोलते हैं. साउंड इज कंसीडर्ड एज अ वेव. Now propagation of sound through air. Now you all know air is the most common medium through which sound travels. Sound normally travels through the medium air. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, forming a region of high pressure called compression. That is shown in the figure. And in next figure, it is also shown that rarefaction is happening. As the object moves to and fro rapidly, it produces a series of compression and rarefaction in the air, which makes the sound to propagate in the medium. Now sound needs a medium to travel. Sound is a mechanical wave and needs a medium of propagation. Sound travels through solids, liquids and gases. Sound does not travel in vacuums. The negative part is here. Sound does not travel in vacuum. As you can see in the activity is given here. In this an electric bell is there, airtight jar is there. We will connect this bell jar to a vacuum pump that is shown in the figure. If the switch is pressed, अगर हमने switch को हमने press किया तो हम sound सुन सकते हैं, bell का आएगा. If air is pumped through the vacuum pump, we cannot hear the sound of the bell. तो उसके बाद हमें जो sound है वो नहीं सुनाई देगा. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो sound है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है. अब इसके साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड. तो फॉर डिस्क्राइबिंग साउंड वी नीड थ्री थिंग्स: फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड. Sound can be graphically represented as a wave. There is change in the density and pressure as sound moves in a medium. Third is compression are the regions of high pressure and density where the particles are crowded and are represented by the upper portion of the curve called crest. That is given in figure. Where is crest and where is trough? The distance between two consecutive compression, that is crest, दो crest के बीच में difference, distance, उसको हम क्या बोलेंगे? Wavelength. And wavelength is represented by the symbol gamma, and the SI unit of this is meter. So in this figure, condensation is there, compression is there, rarefaction is there, and crest and trough are there. The first thing was, and this is all about the characteristic. First characteristic
as you can see through figure, frequency of sound wave, short wavelength, long wavelength. Second is time period of sound wave. Time period of sound wave is defined as 1 upon V, that is time taken for one complete oscillation in the density of the medium is called the time period of the sound wave. Time period represent कैसे करते हैं? The sim capital T, and what is the SI unit of time is seconds. And frequency and time are represented as follows in this figure. High frequency waves are there and low frequency waves are there. In high frequency waves, the wavelength of the time wavelength of wave is smaller, and in low frequency waves, wavelength is size of wavelength is distance between two waves is greater. Third is amplitude of sound wave. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is the amplitude of the sound wave. So the amplitude is simply defined as when we draw a wave, the main line, the origin line से कितनी वो ऊपर गई है, तो वो हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड. अब ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? सेम जो डेंसिटी की है प्रेशर की है. नेक्स्ट इज पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड. पिच ऑफ साउंड जैसे क्या होगा? श्रिलनेस और फ्लॉटनेस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो साउंड की पिच जो होगी वो हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी लो है तो साउंड की पिच लो होगी. लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि द लाउडनेस ऑफ जो साउंड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की. अगर एम्पलीट्यूड बिगर है हमारा तो साउंड क्या होगा? हमारा लाउडर. और एम्पलीट्यूड अगर हमारा स्मॉलर है तो साउंड जो होगा वो हमारा क्या होगा? सॉफ्ट होगा, आराम से बोला जा रहा होगा. तो उसमें क्या होगा? एम्पलीट्यूड हमारा छोटा होगा. और अगर बहुत तेज आवाज आ रही है तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा. अब स्पीड ऑफ साउंड के, अब इससे मैं पता लगाना कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है. स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. अलग अलग मीडिया में जो स्पीड होती है साउंड की वो डिफरेंट होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स एंड लेस लीस्ट इन गैसेस. जब सॉलिड्स की बात हो रही हो तो जो साउंड की स्पीड है वो मच हायर देन लिक्विड्स, और लिक्विड्स में जो साउंड है वो मच हायर देन गैसेस. सबसे ज़्यादा हम गैसेस के थ्रू साउंड की स्पीड पता लगाते हैं, सबसे लेस होती है. The speed of sound also depends on the temperature of the medium. If the temperature of the medium is more, the speed of sound is more. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी हमारी ज़्यादा होगी. ठीक है. अब रिलेशनशिप बिटवीन साउंड वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी का क्या है? फॉर्मूला है सिंपल सा, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी. सिंबल्स आर देयर. अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस. So this topic is over. Thank you.